And there we go. So good evening, everyone. Very warm welcome to the session. So today we are reading the book again. That's Secrets of Karma. If you have the book, that's great. If you don't have the book, I'll still be reading from the book. So we have covered till page 6. Today we will start from page 7. And my intention is to complete at least till page 9 or 10. Let's see how it is. Okay. So I'll start by reading from the book. Mental and verbal karma. Besides physical actions, karma is also created through your thoughts, through your speech. Mental criticism and harsh words cause much harm to people and are an obstacle to learning and growing. Thoughts are energy and are real. You would have experienced that sometimes as you think of someone, that person calls you at that very moment and you are wonderstruck. I was just thinking about you. Your positive thoughts produce positive effects on people and the environment, while your negative thoughts create negative effects. Therefore, a benevolent thought creates karmic income, while ill will or intense hatred for someone makes you incur karmic debts. So let's understand. Sometimes we feel that karma is created only by the physical action that we take. मैंने हाथों से पैरों से किसी को चोट पहुंचाई, इंजरी पहुंचाई, इसी से सिर्फ कर्मा हो सकता है. मैंने हाथों से पैरों से कोई चोरी कर ली, किसी को गलत बोला, किसी को मैं लेजी हो गई या मैंने कुछ गलत किया तो ही सिर्फ कर्मा हो सकता है. ऐसा नहीं है. Karma can be created by your thoughts as well as with your words. So if you are an arhatic yogi, then perhaps you would understand this better, because all our 5 virtues are at the physical level, verbal level, and mental level. So if you see here, karma is also at the verbal and mental level as well, along with the physical level. So if I am hitting someone, that will definitely generate a bad karma. But again, mentally, if I am criticizing someone, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, खाना दबा दूंगी तुम्हारा. That is also karma. आप बोलोगे मैंने सच में थोड़ी गला दबाया था. Did I physically injure that person? I just mentally thought that once you come in my hand, now I'm going to kill you. So I did not physically kill that person. I was just thinking. But still, it is going to generate a karma. And perhaps almost similar karma. Maybe, of course, physically killing someone is going to generate tremendous bad karma. But even mentally criticizing someone, thinking bad of someone is also going to create very, very big negative karma. Other people are going to think bad about you. You are creating a mental injury, a mental obstacle in somebody else's life. कई बार क्या होता है, मैं छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. I have seen it in front of my eyes, that's why I know it. When a child wants to do a love marriage, okay, you love somebody and you go to your parents and say, I want to marry this person. Now the parents are not happy. Either you're doing an intercaste marriage or an inter-religion marriage, or you are, maybe you're marrying another gender, or you're doing something out of the way. So parents, they try that you don't get married. But if you are, stuck with that point, कि हम तो शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, वरना हम किसी से शादी नहीं करेंगे. तो कई बार parents agree कर जाते. They let you do the marriage. But mentally now they are thinking, the day you come back to me, I will not help you. आज आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो. आप जब इस शादी में फंसोगे ना, जब आपका नुकसान होगा ना, जब आपको तकलीफ होगी ना, जब ये लड़का आपको छोड़ के चला जाएगा ना, तब आपको मेरे पास घूम के आना होगा. You're getting your daughter married or you're getting your son married. But mentally, you are thinking that when this man is going to suffer, when my daughter is going to suffer,
When they realize that they have made a mistake, they are not listening to me, that time I will say, you know, you did not listen to me and what are you doing? From beforehand, you are creating an obstacle in their happy married life. पेरेंट्स की तरह आप पहले से ही अपने बच्चों के जिंदगी में एक ऑब्स्टिकल डाल दे रहे हो, आप एक थॉट फॉर्म डाल दे रहे हो कि आपको तो सफर करना ही है, आप सफर करोगे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जब आप लौटोगे मेरे पास तब मैं आपको बताऊंगा या तब मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने गलत हैं। So can you understand why is mental injury also creating bad karma? Because you are damaging your own people's life. Maybe आप अच्छा सोच रहे हो, maybe you are already thinking that, you know, my daughter won't be able to manage in that family, etc., etc. But why to mentally create an obstacle in her life? Why to foresee it and then create an obstacle? Why don't we bless the person? कि चलो जब ये शादी कर ही रही है तो इसकी जिंदगी अच्छी हो, सुखद हो और कुशल हो, I bless the person, etc., etc. But sometimes we don't realize it and we generate the karma. So a good thought, whenever you're thinking good, it will add on to your positive balance. Whenever you're thinking bad, it will create a negative debt. What comes out of the mouth is more important than what goes inside the mouth. Again, ये कहावत हमारे मास्टर चुआ कॉक्सी की तरफ से है. Master used to say that if you eat something negative, it is going to dirty your body. But when you speak something negative, it dirties the soul. कौन सा ज्यादा बुरा कर्मा है? So whatever goes inside the mouth is different, and whatever comes out the mouth is perhaps more important. Just like thoughts, your words carry power. Nurturing words are therapeutic, promoting growth and well-being and generating karmic income. While negative words deplete energy and block progress, thereby creating karmic debt. सेम एग्जाम्पल, आप मेंटली सोचते हो या आप जुबान से बोलते हो, दोनों ही सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है. If somebody is crying in front of me, he or she has to give an exam and she's crying that I don't know how to give the exam, I'll not be able to do it, I'm going to fail, blah blah blah. Mentally I might be thinking, हाँ तुम फेल ही करोगी, पढ़ाई तो की नहीं है, क्या से पास करोगी? Bad karma. Verbally also I am saying, I told you to study, you did not study, if you fail tomorrow don't come to me. Bad karma. ओहा का bad karma. Okay, ये सबसे karmic debt बनता है, आपके पास ये घूम के आएगा. But if I say it's okay, relax, chill, आपने जितना पढ़ाई किया है उस पर फोकस कीजिए, हो सकता है इसी में से आ जाए. आप स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप रिलैक्स रहो, हो सकता है आपको सवाल देके जवाब खुद से आ जाए, आप इन्वोकेशन करके जाओ, होगा तुमसे होगा, डोंट वरी, इट्स ऑल ओके. If I use positive words, encouraging word, it is good karma. Okay, so words and thoughts both has this power. It is said that bumblebees support their little ones fly with the vibrations of their humming sound. You can also help people fly with your vibrations of nurturing thoughts and uplifting words and generate good karma. So usually to say that bumblebees, you know, these bees, there's a beautiful, nice little picture here. I'll show you there. You can see these are the bumblebees if you are not having the book. So these bees, the mother bees, the parent bees, they make a humming sound and they create a vibration, which helps the little baby bees fly. So similarly, if you and I have good vibration, if we have good thoughts, if we have positive attitude, if we can give energy to somebody else, then that somebody else can fly high with our energy. Okay, so yesterday I was just watching a little movie clip from somewhere. It was a Kung Fu Panda, and it was said out there, you know, there was a small scene that the father Kung Fu Panda was so scared. He was like not at all brave. How did somebody else, you know, encourage him that you don't have to be brave, you just have to feel brave, and the rest of it is going to happen. And how that same father Kung Fu Panda, like, you know, he turns out to be a great warrior, and he
helps his son go and everything like that. So that small clip really took my attention that हम कई बार किसी को अपने शब्दों से अपनी सोच से वो ताकत दे सकते हैं जो शायद हम फिजिकली ना दे सकें, पर अपने सोच से अपने शब्दों से हम किसी को वो ताकत दे सकते हैं. The hidden cause. So we are moving on to the next chapter, chapter number 2, the hidden cause. Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? So there's a question here. A disciple of Jesus asks him that if a baby is born blind, then whose sin is it? किसकी गलती का सजा इस बच्चे को मिल रहा है कि ये बच्चा जन्म से ही अंधा है? Is it the sin of the parents कि उनको एक अंधा बच्चा मिला जिसके कारण उनको अभी उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा? Or is it the sin of the child who himself is born blind? If one reaps what he sows, then how is it that good people, even innocent children and newborns, suffer much? अगर सबको अपने ही जन्म का कर्मा, अपना ही कर्मा अगर भोगना है, तो नवजात शिशु जो जस्ट अभी जिन्होंने जन्म लिया है, वो किसका कर्मा भोग रहे हैं? उन्होंने तो अभी तक कोई कर्मा की ही नहीं है, right? Moreover, all that one sows are not reaped within a lifetime. And sometimes the offender gets away with the crime. Then people would pay an eye for an eye, tooth for tooth, hand for hand. Surely they will have to come back in another lifetime to pay their karmic debts. इसी सवाल के ऊपर जवाब आता है जन्म, incarnations. If I don't believe in incarnations, if I feel this is my only incarnation, I am born and I will die and the story is over. If I say this, then how will you explain the birth of a blind child? A child with no arms, a child with no leg, a child with a hole in the heart, a child who doesn't even take birth, maybe a child who gets birth for only 10 days, 14 days. They go into the ICU and then they cannot survive. How will you explain this? एक बच्चा जन्म लेते ही अगर किसी कारण से सफर कर रहा है, हम उसके सफरिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर हम जन्मों को नहीं मानते हैं? तो मैंने तो अभी अभी जन्म लिया है, एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसने तो अभी तक कोई कर्मा किया ही नहीं है, तो उसे किस बात की सजा मिल रही है? Here is what the incarnations come into play. So whatever we sow in one lifetime does not come back to us all in same lifetime. If you also want to explain it in another way, today I am 90 years old already. Maybe I will die tomorrow or in a month. But I am still generating negative karma. Being 90 years old, I am screwing the life of my children and my grandchildren, and I'm screaming and I'm shouting and I'm howling on my my maids and my caretakers. मैं तो कल परसों में टाटा बाय बाय होने वाली हूँ, तो ये कर्मा कहाँ जाएगा? 4-5 दिन में तो कर्मा वापस ही आ सकता है ना? So what will happen to that karma? This is where incarnations come into play. All that we sow in one lifetime does not come back to us in the same lifetime. Some comes to us, some matures when we take another birth. One lifetime in our journey on earth is like a halt at a station. Krishna said, as a man casting off worn out garments, take new ones, so the dweller in the body, casting off worn out bodies, enter into new ones. So Lord Krishna said that just the way we change our clothes every single day, today I'm wearing this, tomorrow I'm going to take it off and wear another one. Similarly, the soul just changes the body.
वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में घुस जाता है उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से हम एक कपड़े से निकल के दूसरे कपड़े में घुस जाते हैं। एंड एक पूरा जन्म which is maybe made up of 50, 60, 70, 80, 90, 100 years, एक सोल की जर्नी के हिसाब से अर्थ के अंदर सोल की जर्नी के हिसाब से एक छोटा सा स्टेशन जैसा है। Just the way if you start from Calcutta and you want to go to Delhi, you will have 20 stations in between. In each station, the train might halt for 5 minutes, and the journey between the two stations is something like a 20-30 minute. It is just like that for the soul on planet Earth. You are on a long journey. Each incarnation is just like a station. You halt, you stay some time in that station, you move around, and you move on to the next station. And every station has a different format. कोई स्टेशन में हमें ज्यादा देर रुकना पड़ता है, हम वहां से सब्जी कचौड़ी खाते हैं। कोई स्टेशन में हम बहुत कम टाइम रुकते हैं, बस खिड़की से बाहर देख के चले जाते हैं। कोई स्टेशन में मस्त खाना उठ के आता है ट्रेन में, एंड हम बहुत कुछ खरीदते हैं खाते हैं, है ना। some stations are very boring, ट्रेन फंस जाता है तो 2-3 घंटा लग जाता है उसी एक स्टेशन में बैठे बैठे। Okay, and some interesting guys like Geet, she comes out from the train and then she cannot go into the train back again. So every station has a different story. Similarly, हमारे हर जिंदगी में हर जन्म में एक नई कहानी होती है, कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ अलग तरीके से जिंदगी गुजरती है, but it is just like a station in the long journey. Okay? What you have to experience now has a connection with your actions in your past lives. So despite being good and doing good, if you still suffer, it is due to the effect of your past actions. आप इस जन्म में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके past lifetime के साथ connected है. If you are having a good life, like in the sense I am a very benevolent person, I am donating, I am happy, I keep other people happy, but still I am going through some suffering, that means I have done something negative in my past lifetimes. It is not the result of my actions of this lifetime. And this is not different for anyone. ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके जिंदगी में हो रहा है. I am the one who is suffering. मैं ही अच्छा कर रही हूँ और मेरे साथ ही बुरा हो रहा है. It's not you alone. Millions and millions of people in the world are going through such a situation. They are doing good things, but they are having a tough time. Why? Because they have done some bad things in their past karma. Some people are doing bad things, but having a good time. That means they have done something good in their previous karma. Now they have forgotten that good and they are doing bad things. This will also catch up. Okay? दोनों चीजें दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ हो रही हैं. I think we have some time, so I'll move on to the next chapter. 3 types of karma. Okay, this is very important and thoda complicated. So I will go slow. Perhaps I'll just do half of the chapter today. So there are 3 types of karma. Are we good so far? Are we going at a good pace? Great. 3 types of karma. The ancient sages classified karma into 3 types and used the symbol of archery to explain them. Dhanush. एक पर्सन है जो धनुष चलाने वाला है, ठीक है. तो उसके पास एक धनुष है जो उसके हाथ में है, एक बहुत सारा धनुष उसके पास पीछे रखा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है, और एक धनुष उसने छोड़ दिया है, चला चुका है. तो 3 तरह के कर्म भी हो सकता है. The stock of arrows in the archer's case is the accumulated reserve of your karma, good or bad, from your past lifetimes. So if I have a bag full of arrows behind me, I am going to use them in the future. This is like a stock. Good things, bad things which I have done in my previous lifetimes, they are in my stock. I can use them in need. Okay? तो मैंने अपने पिछले जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, उसके साथ मेरा जो स्टॉक है, I have 10 good actions, I have 20 bad actions, I have 100 good actions. All that is behind me like arrows which I can use at the time of need. आज मुझे अचानक से तबीयत बहुत खराब हो जाता है,
मुझे गुड कर्मा का जरूरत है, मैंने अपने किसी लाइफ टाइम में अगर किसी और का मदद किया होगा तबीयत अच्छा करने के लिए, तो वो मैं अभी यूज कर सकती हूँ अपना तबीयत ठीक करने के लिए। ओके, बट हम लोग ऐसे, आई कम टू दैट हाउ इज इट सिलेक्टेड। दिस इज कॉल्ड संचिता कर्मा और कर्मा दैट इज येट टू फ्रुक्टिफाई। इसे क्या कहते हैं? संचित कर्मा। इफ यू रीड संस्कृत बुक्स ना, यू विल गेट दिस टर्म मेनी मेनी टाइम्स कि आपके संचित कर्मा कैसे हैं। Many times astrologers they are going to look at your horoscope, your chart and say आपके ना संचित कर्मा इतने अच्छे नहीं है, या आपके तो संचित कर्मा बहुत अच्छे हैं, आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे, blah blah blah. Okay? So संचित कर्मा is what is in store for you. It has not yet matured. From this reserve, you brought a portion to experience and work out in this lifetime. इसी संचित कर्मा से, स्टॉक से थोड़ा सा मैं इस जन्म में लेके आई हूँ. So if I am born into a happy family, if I am born into a rich family, if I am born into a family who loves me a lot, then I have brought forward some of that stock with me in my this lifetime. ठीक है, पूरा का पूरा तो स्टॉक में नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं इस जन्म में अपने साथ लेकर आई हूँ कि इस जन्म में मैं ये थोड़ा सा हिस्सा अपने स्टॉक से यूज करूंगी. तो मैं एक अच्छे परिवार में जन्म लूंगी जो मेरे माता पिता मुझे खुश रखेंगे, रिच फैमिली होगा, मेरे पास पैसे होंगे डे वन से. ठीक, दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्मा, symbolized by the arrow that left the archer's bow. Prarabdha karma means fructified karma that you will reap in this embodiment. इस जन्म में जो मुझे मिलने वाला है, जैसे मैंने कहा इस जन्म में मैंने एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, इस जन्म में आई हैव लविंग पेरेंट्स, in this incarnation I'm born into a rich family, so I will never have financial problem. These are the karma which is already matured in my this lifetime. मेरे पास से कुछ कर्मा मैंने इस जन्म में यूज कर लिया. That is depicted by the bow and arrow which the archer has already left. मैंने तीर चला दिया है, मुझे ऑलरेडी इस जन्म में ये मिल गया है, तो ये मेरे प्रारब्ध कर्मा है. प्रारब्ध कर्मा फिर क्या हुआ? संचित कर्मा का वो हिस्सा जो मैंने इस जन्म में यूटिलाइज कर लिया. ओके, इज दिस पार्ट क्लियर टिल नाउ? द एरो इन द हैंड इज आगामी और फ्यूचर कर्मा. अभी मैं एक एरो लेके इंतजार कर रही हूँ, when will the bird come or when will the thing come, and I will use this arrow. I have not used it yet. I will use this arrow. This is called agami karma or future karma. It is the karma that is yet to arise for your actions and which will take effect in the future. If not neutralized, the agami karma gets added to the sanchit karma. मतलब कि अगर मैंने अभी अभी मैं एक रिच घर में हूँ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टेकन बर्थ इन अ रिच फैमिली, इन अ वेरी वेल टू डू फैमिली. नाउ I the soul, I decide I will not keep all the money to myself. I will also donate, I will also share. People who are in need, I will help them with my money. तो ये क्या हुआ? मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, नया नया कर्मा मेरा जनरेट हो रहा है. अगर मैंने उसे इसी जन्म में यूटिलाइज नहीं कर लिया, मैंने दूसरों की मदद की, मुझे भी बहुत सारा मदद मिल गया, तो ये तो यूटिलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. अगर न्यूट्रलाइज नहीं होता है, इट विल बी एडेड टू माई संचित कर्म. Okay, so there are three types of things. One is sanchit karma, purana bank balance. One is prarabdha karma, which I am utilizing in this incarnation already. One is agami karma, which is my future actions, my future results. Whatever I am doing right now, generating future effect. If that future effect is utilized in my this incarnation, then khatam. मैंने कर्मा किया, उसके अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया, खत्म. If I don't utilize it, it will go and get added into my sanchit karma. Okay, so three types of karma. However, you have the free will to choose your present actions and nullify agami karma.
For instance, if you had inflicted pain on someone, you can do good to that person to offset that bad karma that can accrue as a result of your negative action. तो ये हमारे सोल के हिसाब से हमारे हाथ में होता है. Do I want to neutralize my karma? Do I want to keep doing bad? All three types of karma have a positive or negative effect on depending upon the actions that created them. For example, if you have positive prarabdha karma to experience in this lifetime, you will have good things in life, regardless of your present actions. पुराना कर्मा अगर अच्छा है तो इस जन्म में मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. You may do unwholesome actions, yet have a good life with all the comforts of the world. ऐसे कुछ लोग हम लोग देखते हैं ना दुनिया में कि जो लोग गलत पे गलत किए जा रहे हैं पर जिनके साथ अच्छे पे अच्छा हुए जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनका पिछला कर्मा अच्छा था. However, if you carry negative prarabdha karma to work out in this lifetime, then despite your good nature and benevolent actions, you can have a life full of pain and misery. हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छा लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. क्यों? क्योंकि हमारा पुराना वाला कर्मा, संचित कर्मा नेगेटिव था, बुरा था. Hence, there is absolute justice in bad people having a good time and good people having a bad time, each reaping the fruits of their respective good or bad prarabdha karma. तो अगर हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान बहुत अनफेयर है, ये इंसान इतना खराब कर रहा है, देखो तरक्की पे तरक्की हो रही है, वो इंसान इतना अच्छा कर रहा है, देखो नीचे पे नीचे जा रहा है. कहते हैं कि नहीं हम लोग ये सब चीजें, हम लोग को क्वेश्चन मार्क आता है कि भगवान हमारा हिसाब किताब थोड़ा झोल नहीं है, aren't you doing something wrong out there? मैं आऊं क्या मदद करने आपकी? आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो, है ना. कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ आता वाता तो है नहीं, क्या जस्टिस कर रहे हैं, क्या किसी कोई इतना बुरा इंसान है उसको अच्छे पे अच्छा हुई जा रहा है और ये इंसान इतना अच्छा है, कभी कभी हम इतने अच्छे हैं और मेरे साथ बुरा पे बुरा हो जा रहा है. तो हम लोग को लगता है भगवान को थोड़ा लेसन लेने का जरूरत है, थोड़ा थोड़ा सीख लो, थोड़ा मैनेजमेंट पावर सीख लो, थोड़ा डिसीजन मेकिंग सीख लो, थोड़ा गिव एंड टेक सीख लो. आता तो कुछ है नहीं तुमको, ऐसे ही भगवान बन के बैठ गए हो. तो बहुत कुछ चलता है इंसानों के दिमाग में. बट एक्चुअल में अगर हम कर्मा को समझे तो कर्मा इज इन 100% balanced and aligned form. You cannot get anything extra. You cannot skip anything. अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छा आपके पास घूम के आएगा ही आएगा. अगर आपने बुरे कर्म किए हैं वो बुरा आपके पास घूम के आएगा ही आएगा. It cannot be skipped. Okay, so this line is very important. There is absolute justice in bad people having a good time and good people having a bad time, each reaping the fruits of their respective good or bad prarabdha karma. While you cannot avoid negative prarabdha karma meant for you to experience in this lifetime, you can generate positive karma through benevolent actions that will act as a shock absorber, thereby reducing its impact on you. हम अगर बुरा कर्म कर चुके हैं पास्ट में तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, रिजल्ट आएगा ही आएगा सामने. बट अगर हम अच्छे कर्म करने लग जाएं, अच्छा से अच्छा सोचिए, अच्छा से अच्छा करिए, अच्छा से अच्छा करें, तो वो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करे. जहां पे हम थप 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 कर रहे होते वहां हम बाउंस कर रहे मिलेंगे अच्छे कर्मों की वजह से. So do not stop doing good. Now this is one point which I will really like to explain. Sometimes, I have met people, especially because I do so much of counseling, I know people, they leave doing good things. They say, अच्छाई करके मेरे को मिला क्या? तकलीफ पे तकलीफ हो रही है, बेटर है मैं थोड़ा बुरा करके देख लूं. Like
especially I personally know a person who said that वो स्कूल में बहुत चीटिंग करते थे, उन्होंने चीटिंग करके सब पास कर लिया, पास 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 पास। फिर उनको किसी ने समझाया, एक्चुअली कुछ हुआ तो उनको लगा कि चलो चीटिंग नहीं करते। एनीवे, इसलिए अच्छा करके क्या मिला, बेटे ने चीटिंग कर रहा था, पास हो रहा था। सच्चाई किया, चीटिंग नहीं किया, फेल किया, मम्मी पापा ने मार दिया, ये किया वो क्या, क्या भला हुआ मेरा। So, people, if they don't get instant results, they will usually leave the side of the good. They will stop doing good and go to do the bad thing because they are seeing ना कि कुछ लोग मेरे सामने बुरा कर रहे हैं और उनको better result मिल रहा है. But my dear friends, this is not a permanent solution. Because if you're cheating right now, if you're doing a fraud right now, if you're taking the wrong way right now, this will catch up with you. This is like वो हाथी के दांत देखने के कुछ और चबाने के कुछ. What you're seeing right now is just the outer nice tusks of the hathi, but the hathi never uses that tusk to eat the food. You have to have your inner teeth to eat the food. So it is very important that if you and I are doing something good and by chance we are not getting result out of it, we have to continue to do that good. Because we don't know how that good action is acting like a like a shock absorber in our life. It is reducing our pains silently. We are not being able to see, we are not being able to realize. पर कहीं ना कहीं हमारा अच्छा कर्म, हम जो अच्छा कर रहे हैं, वो हमें बुराई से थोड़ा बहुत बचा रहा है, एक शॉक absorber की तरह काम कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं. So it's my humble request to everyone that sometimes you might get bored doing good things. You might feel exhausted. यार कितना अच्छा करे, रिजल्ट नहीं आ रहा है. People are making fool out of me. People are taking advantage of my goodness. I only have to do forgiveness. I only have to keep quiet. I only have to take the right decision all the time. But I'm not getting any result. Still, I will fold my hands and request you, continue to do the good. Continue to do what you're doing. Continue to do what is the right thing to do. You will get the result. You will get the solutions. And believe me, you are not alone in this path. ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है. Right now, there are approximately 67 of us, and I'm pretty much sure at least 50 of us would say the same thing. कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ही अच्छाई फॉलो की, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सच बोला, मैंने हेल्प करने की कोशिश की, मैं घर में चाहती हूँ कि शांति रहे, बट सामने वाले बुरा नहीं सुनते हैं मेरी बात, सामने वाले चेंज नहीं हो रहे हैं. कितना करे और how much more? Till what time am I supposed to be that good person? I'm sick and tired of becoming this good person. I also want to become a villain someday. I also want to kick people one day. I also want to shout, scream, do bad one day. And see what happens. देखेंगे क्या होता है, कितना बुरा हो सकता है. जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा ही हो रहा है. You see how many true I have already got in the chat box. True, 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 true. Yes, yes, yes. So believe me, you are not alone in this path. ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. कल ही सोच रही थी छोड़ दो सब. You're not alone in this path. It is happening with so many of us, so many of the people. But if you leave doing the good, अगर आप सच का साथ, अच्छे कर्म का साथ, सच्चाई का साथ, अच्छाई का साथ आप छोड़ दोगे ना, और बुरा हो सकता है. It's going to turn from the frying pan to the fire. But you would have lost that momentum of doing good. You are at a spree of doing good. It's like an inertia. आप अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो. डिफिकल्ट है पर अच्छा करते रहो. अगर आप एक बार छोड़ दोगे ना, अच्छाई में वापस आना बहुत मुश्किल है. It's as it is the most difficult path. नहीं आने देंगे आपको अच्छाई में वापस.
So even sometimes when you feel that I have to give up, I will give up. Try to hold on to someone. कोई एक ऐसा सेशन देख लीजिए, कोई एक ऐसे पर्सन से बात कर लीजिए जो खुद पॉजिटिव हो. डोंट गो टू नेगेटिव पीपल फॉर एडवाइस. ओके, प्लीज सिलेक्ट योर एडवाइजर्स वाइजली. कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी खुद डिप्रेशन में, उसे जाके अपनी तकलीफें मत सुनाइए. आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा, कटेगा. सिलेक्ट, थिंक, whom can I go to when I am feeling that I will give up. मैं हारने वाली हूँ, मैं खत्म होने वाली हूँ, I will lose it. चलो अच्छा है, मेरा ही कोई वीडियो चला के सुन लीजिए. मैं एक ही चीज बकती रहती हूँ हमेशा. So just hold on to somebody, take help. Don't be a loner. This is also what our master, our teacher, Grandmaster Chopaps used to say. Do not be a loner. मदद लेने से कभी पीछे मत हटिए. आप ये मत सोचिए कि मैं मदद लूंगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या कोई क्या बोलेगा. Don't think that way. Take help from positive people, from good people. And you need to continue to do the good work. इसलिए master says twin heart. कुछ भी हो twin heart करिए. When you feel that you are going to give up, and then you do the twin heart. The twin heart says, wherever there is darkness, let me sow light. Remember, you are there in the universe as well. You are there on planet Earth as well. So when you are praying, wherever there is darkness, let me sow light. Light will come into your life. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हारने से पहले ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें. गिव अप करने से पहले ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें. कुछ नेगेटिव करने से पहले ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें. If I find a human help, fantastic. If I don't find a human help, I'll take it from the twin heart. That will really save you big time. Okay, so we shall stop out there on that chapter. It's great that we could cover 2-3 chapters today. Let's do the twin heart meditation now. And during the meditation, we will all pray, all of us, that whatever challenge we are going through right now, हम सबके जिंदगी में कोई ना कोई एक बड़ी सी चैलेंज पक्का से है. कभी हेल्थ, कभी वेल्थ, कभी रिलेशनशिप, कभी इमोशन, कभी कुछ तो कभी कुछ. We will all pray together that may each one of us get our answers, get our solutions, get help from this twin heart meditation today. We all together invoke, may this twin heart meditation help each one of us get hope, get trust, get faith that we can survive, we can do what is right, and refrain ourselves, stop ourselves from doing wrong. हम भगवान से और गुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि आज का ये मेडिटेशन हम सबको वो अंदरूनी शक्ति दे कि हम अच्छा से अच्छा कर सके, हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चल सके. और जो भी हमारी जिंदगी में इस वक्त उथल पुथल हो रही है, तकलीफ हो रही है, समस्या है, उसका सल्यूशन हमें आज मिल जाए. We are all super receptive and perfect, so be it.